Sometimes the river does not come to you. She waits for you to be ready. From last 3 days, I kept coming back to find the Ganga, but she was not there. And today, she finally let me see her. Before this journey began, I made a rule for myself. Every morning, my day would begin at the bank of Ganga, and every evening it would end at the bank of Ganga. But first, let me take you back where the day began. I woke up at Ravi Bhai's home. His mother had made the breakfast for me. See, such a heavy food. After taking their blessings, saying them goodbye. बहुत बढ़िया खाना खिलाया आपने, अच्छा था। अच्छा जी, रवि को भी कहना थैंक यू मेरी तरफ से, मैं वैसे फोन करूंगा उसको। I went to Chaudhary First Choice, a car showroom here in Biznor. Sounds random, right? But here I met a boy named Chirag and he shared something that shook. So when I asked him this question, what is Ganga in your life? अगर हम उनके पास जाते हैं हमें एक अच्छी सी वो ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हमें एक्टिवनेस आती है। तुम कब गए गंगा के पास? हम अभी नहान आया था तब गए थे। क्या होता है नहान, थोड़ा बताओ। नहान में हम 4-5 दिन पहले जाते हैं, फिर वहाँ पे टेंट लगाते हैं और उसमें ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं। तो वहाँ जाके दोस्त तुम्हारे क्या बोलते हैं गंगा के बारे में? मैं तो हम तो आधा घंटे तक बैठे रहते हैं, हमें टाइम का भी नहीं पता चला था, मतलब एकदम ही निकल जाता टाइम और एक्टिवनेस से आ जाती है, नेचुरल सा लगता है वो। His answer made me realize that boy of this age and a man of my age, we both feel and connect with the Ganga in the same way. तो गंगा को अगर 2 लाइनों में या 1 लाइन में बताना पड़े तो क्या बताओगे? गंगा हमारी माँ। Standing there in that showroom, I felt Chirag was preparing me for what was coming. आपकी जो जर्नी है वो बहुत बढ़िया जाए और बहुत अच्छे से आप सारे वर्ल्ड का वो करो। Thank you so much. I rode bicycle 12 kilometers and then I saw her. Yesterday I was confused, demotivated, and I was thinking why the Ganga refused to meet me. And now when I'm standing here, I have understood that Ganga had not rejected me. She was preparing me. She wanted to see if I would keep going even when I could not see her, and I did. And that is why today she showed herself to me. So when I was standing there, first of all I met on this barrage were 2 kids. आपका क्या नाम है? कृष्णा। और आपका? रचित। रचित। मेरा नाम अमित। बोट के कितने पैसे लेते हैं? 50। और कहाँ तक घुमाते हैं? यहाँ पर लाल बोर्ड है। वहाँ तक बस। ये तो थोड़ा सा ही है, लूट रहे हैं तो। They are born and brought up on this ghat. And for them, Ganga, she was not sacred in the way as it is for the temples. For them, Ganga was a home. तुम कितने साल के हो अभी? मैं 12 साल का हूँ। तुम पैदा यहीं हुए, 12 साल से रह भी यहीं रहे हो। So when I was talking to them, I came to know that their father is the one who is running those boats. पापा मेरे वाली बोट चलाते हैं। अच्छा। This is the time when I feel ashamed because unknowingly I made a comment on the boating prices. I asked them same question which I asked everyone. What is Ganga for you? गंगा में कूड़ा कचरा पन्नी ये नहीं डालना। ये तो वो है जो दीवार पे लिखा है। तुम गंगा को क्या मानते हो? तुम्हारा क्या मानना है गंगा के बारे में? माँ। ये भी किसी ने सिखाया होगा। है तो नदी ही ना। तो क्या क्या करते हो नदी में जाके आप? नदी में जाके मछली पकड़ते हो नदी में? नहीं। इनकी वीडियो बनाते हो? हाँ वीडियो बनाओ इसके मूवी। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ इससे कि गंगा का क्या मतलब है इनके लिए, छोटे बच्चों के लिए? हाँ? तो कहते मैं गंगा को माँ समझता हूँ। माँ समझते हैं? हाँ। रोज भी पैसे कर रहे हैं गंगा में से। कितने पैसे निकालते हो? यहीं से मिल जाते हैं 100-200। तुम डाइव करते हो नीचे जंप मार के? कितने गहरे जा सकते हो पानी में? सांस कितनी देर रोक सकते हो बताओ? 1 मिनट रोक सकते हो? 2 मिनट? 1-2। चल दोनों कंपटीशन लगाते हैं कौन ज्यादा रोकता है। ठीक है? अरे वो क्या रेडी हो? 3 पे सांस रोक के शुरू, नाक बंद करके, है ना? तो एक हाथ से नाक बंद, तुम भी ठीक है? ओके।
ठीक बोल दे ले लिया ना। पता हमने कितनी देर सांस रोकी है? मेरा हो गया था 55 सेकंड, पर बड़ा मुश्किल था यार। चोरी चोरी कर रहा था। मैं तो तू कर दिया था ये, मैं नहीं, मुझे आवाज आ रही थी जब तो मैं कर रहा। What I realized that Ganga is not a place for them. It is a home for them. It is their playground. सबसे अजीब चीज तुम्हें गंगा में क्या मिली? बंदूक कहाँ पे मिली थी बंदूक? उधर पार, तो किसी ने? तो मेरे दोस्त ने छीन के फेंक दी गंगा में। Okay. Ganga is something which is shaping their childhood and maybe their future also, because all the activities are based on the Ganga, and for these kids Ganga was everything. तो नहाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? नहाने के लिए यहाँ पे जंजीर लग रखी है, उनका पकड़ के नहा लेना बस। अब मैं साइकिल का क्या करूँ? इसका ध्यान कैसे रखेंगे? हम रख लेंगे, ये भी आएंगे पीछे, ये भी जान। अच्छा, ये भी यहाँ होते हैं। अच्छा, ये आप छोले बेच रहे हो? बढ़िया, फिर तो आपके भरोसे छोड़ जाऊँ साइकिल, कोई दिक्कत नहीं। In last 4 days of cycling, I had never taken a holiday. I had never immersed myself in the water, and today it was the first time when I stepped into the water. Everything stopped. The noise, the thoughts, doubts, it all stopped. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। The water was cool, clear, and alive. As it touched my skin, I felt something shifting inside me. It was not about the purification. It was not about washing away the sins. It was about return. It was like I'm coming home. It was like I was remembering something which I had forgotten. The moment I was taking the dip inside the water, my eyes closed and my whole being surrendered. And in that moment of surrender, I felt Ganga's acceptance. And that acceptance was not as a deity, but as a mother. I felt her presence. I felt a force which was saying me, you belong here. You have always belonged to this place, belonged to me. After my dip, I was sitting by the water. An old lady selling small basket, each one containing some flowers, a lamp, priced 10 rupee each. 20 का सिक्का निकला है. I go to her and start talking. हाँ. जला के गंगा तुम जोत। अच्छा, बस जाके फिर गंगा जी में सला दो। हाँ। तो जब छोड़ के आएंगे तब कुछ बोलना भी होता है, कहना होता है। क्या कहोगे? राजी खुशी कहिए गंगा माँ तुम्हारा प्रसाद है, गंगा माँ तुम सिर पार कर लिए ऐसे प्रसाद को गंगा माँ हमारी मनोकामना पूरी करूंगी गंगा माँ। मनोकामना पहले मांगनी पड़ेगी। हाँ, आज प्रसाद चाहोगे जल्दी कर दिया। मैंने तो सोचा नहीं क्या मांगना है। She did not explain the rituals. She just reminded me to ask for जो blessings. मांगोगे वही मिलेगा गंगा। जो मांगो वो मिल जाएगा। ठीक है फिर तो। As guided by her, I get into the water. I never thought about what I want to ask. I pray without asking anything for myself. I returned to her. रहने वाले कहाँ के? ये जबलपुर मेरा है। And this is when I asked her the question, what is Ganga in your life? And she answered with her whole existence. तो जो दिन से गंगा ही जरूरी है। कैसे? कैसे? तो क्या दुनिया यहाँ होती? हाँ? आपको लगता है कि गंगा माँ से कुछ भी मांगो तो मिलता है? हाँ। गंगा को आप माँ मानते हो, नदी मानते हो? नहीं, माँ मानते हैं, गंगा माँ है, सबकी माँ है मुझे तो। इसलिए आप भी माँ मानते लगी मरुआ भी नहीं आएगा, जिंदा भी नहीं आएगा। हाँ? हो? अच्छा। वैसे लेन लग रही है। हाँ। आ रहे नहीं आ रहे, सुबह दिन निकलते याद आने। जलाने के लिए। हाँ, जो कितनी भीड़ लग रही है ये सब वहीं तैयार है। और बहुत से तो नहा के भी नहीं जाते हैं, छींटा मार के चले जाए। बहुत से उन्होंने कहा हम इतने दूर चाहें तो गंगा नहा को।
मेरी दादी बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। अब तो वो चले गए छोड़ के मुझे, पर जब वो थे ना तो आपके जैसे दिखते थे बिल्कुल। तो आपको जब बैठे हुए देख रहा था तो मुझे उनकी याद आ रही थी। आपका नाम क्या है? मैं छोटी, आप तो बहुत बड़े हो। जब सब घर में ये छोटी ना तो छोटी नाम रख ले, अब वैसे तो भगवान देंगे। तो आप घर में छोटे थे इसलिए छोटी नाम रखा हुआ है, अभी तक वही चल रहा है। वही चल रहा, छोटी चल रहा सब में। दूसरा नाम नहीं कोई रखा? जब ये चल रहा तो वही एक ही चला फिर। बहुत बढ़िया अम्मा, मिलेंगे कभी, ठीक है? ध्यान रखना अपना। Ganga is not just the water. She is in the people who live for her. She is in the hands that serve her. She is in the heart that love her. And this old lady, she was a living embodiment of that love. When I was taking my dip, I asked Raju bhai to take care of my bicycle in my absence. राजू भाई ठीक, अब छोले खिला दो। तो पेमेंट ऑनलाइन होगी नहीं होगी? ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी? ऑनलाइन हो जाएगी, ना होगी ना, और ना होने की कोई जो ना। अरे नहीं, ऑनलाइन कर दूंगा, मेरे पास कैश नहीं है, एटीएम ढूंढनी पड़ेगी कहीं जाके। खिलाओ फिर बढ़िया सा कुछ अच्छा सा। राजू भाई एक और बना देना। ये तुम लो, मैं अपने लिए दूसरा मंगाना रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए, मैं भूल ही गया था, ध्यान ही नहीं रहा वीडियो के चक्कर में मुझे। अब मिलके खाएंगे, आने दो एक और। When I returned to pay, कितने हुए भाई? होगा कोई बात नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे तो ना कोई बात नहीं। ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं, हैगा ऑनलाइन आपके पास? ना ऑनलाइन। I felt very uncomfortable accepting free food. कोई बात नहीं। नहीं भाई ऐसे कोई बात नहीं थोड़ा होता। And I went on a hunt for cash. I wanted somebody to pay me cash against an online transfer to their bank account. And in this effort, I came across another act of kindness. मैंने छोले खाए हैं, 20 रुपए देने हैं उसको। मैं आपको 20 रुपए ट्रांसफर कर दूं कैश ऑनलाइन? मैंने बोला उसको, कहता कोई बात नहीं। वो कह रहा है मत दो, ऐसे चले जाओ। अब किस नंबर पे डालूं बताओ? छोड़ दो रहने दो। यही बात है, वो बोल रहा है छोड़ दो रहने दो। मैं उस हिसाब से लेके उसको दे रहा हूँ, फिर आपका कर्जदार होके जाऊंगा गंगा के किनारे से। यहाँ का रिवाज है क्या ऐसा कुछ कि कोई पैसे नहीं लेता? पूरे स्टाफ ऐसा है कि थोड़ा आदमी नहीं आता, मतलब यार एक दूसरे को समझते हैं कि बात दूसरे कुछ नहीं। अच्छा, दिस इज व्हेन आई अंडरस्टूड दैट this journey is not about seeing Ganga, it is about encountering humanity around her. Every person I was meeting is a living expression of what Ganga means. Those kids, that old lady selling the lamps, this chole vendor, they all are Ganga to me. ऐसी कोई बात नहीं। अमानत आपकी, थैंक यू। वो चैनल का क्या नाम है भैया? After the Beras, I made a decision that I would ride 90 km following the Ganga, not on the main road but through the fields. Through the gravel and through the path closest to her. It was difficult, but after finally meeting Ganga, I was not ready to let her go out of my sight. हाँ, 3.5 more kilometer to this place, which is known as Vidur Kutia, or Ganj also is another name, GNZ. Sunset is about to happen in some time. आज एक्चुअल में मैं गंगा माता के किनारे किनारे पे चल पा रहा हूँ, और ये आज हुआ जा कर के इतने दिनों के बाद। वरना मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। मुझे लगता था कि गंगा माँ मुझे चाहती नहीं कि मैं उनके नज़दीक आसपास रहूँ, हमेशा मेरे को दूर भगा देती हैं। बट आज फाइनली ऐसा हो रहा है, एंड आई एम सो थैंकफुल। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड राइट नाउ। एंड व्हेन आई वाज राइडिंग दीज टू लोकल्स on the road, they approached me, they stopped me and gave me a warning. इस टाइम को बाहर निकल ले। कौन? चित्ता कहते हैं, चित्ता। अच्छा, तो चीता आदमी को मार देता है क्या? पक्की बात है। यहाँ पे कितनी चीते हैं? बहरहाल तो एक ही है, एक ही देखा है रोज ही शाम के टाइम इस जगह पे। भाई घूमना है स्कूल पर, निकल जाओगे यार। ऐसे घूमना है, ऐसे नहीं। ये तो बस दिन दिवाली निकल रहे हैं क्या लोग भी। अच्छा, तो कितने बजे के बाद नहीं निकलते यहाँ के लोग?
वो तो मतलब घर जाने चालू हो गए से सब। वो तो जानवर पता नहीं किस टाइम निकलता पहले किस टाइम बाहर आ जाए। बुरे वक्त जिसका आएगा वो जाएगा, वो जाएगा, अपना नहीं आया, अभी चिंता ना करो। लो भाई, so this morning my friend Ravi's dad, he was also saying these days here Guldar is on hunt. I didn't know the meaning of Guldar. What is that? I didn't even ask, and now I came to know that Guldar means cheetah. Seems this is the end of my pain. I have reached to the city. By the evening, I reached Bidarkuti, a small village. ये village है जो आप देख रहे हैं. I was tired. I needed a shelter. I asked the group of local kids if they knew a place where I could stay that night. They took me to an old age home, but the manager there, she refused. But the kids, they didn't give up. They took me to the inter college of this village, and there they introduced me to an old man, the caretaker of this inter college. He called up to his higher authority and he got a special approval for me so that I can stay there that night. After settling there, I went to the Vidurkuti temple, and it was the Aarti time. I myself participated in the Aarti. I have come back to the hall. This is the place where I will sleep tonight. It's a lot, isn't it? So much. That night, Magan Baba invited me to his home for dinner. We sat together, we ate together, we spoke together, and once again I realized Ganga's grace is not just in the river. It is in the people who surrounds her. So when you follow a sacred river, you meet the sacred people. So today was the day when Ganga finally accepted me, but not because I deserved it, but because I stopped demanding and started surrendering. In last 4 days, I learned that acceptance does not come from the persistency alone. It comes from humility, it comes from being willing to fail, it comes from being willing to ask for help, and from being willing to receive the kindness. On my today's journey, I met with a mother who fed me this morning. I met a boy who taught me about the flow. I met the kids who showed me the home. I met a vendor who gave me the grace. I met an old lady who taught me about the devotion. And in the evening, I met a caretaker who opened his home for me. And Ganga is in all of them, not just in the water. Ganga is in the hearts of everyone around. And finally, when I took that holy dip in the Ganga this morning, I was not washing away my past. In fact, I was being reborn into my new understanding. I think Ganga is not a river to follow. She is a river to belong to. And today, finally, I am feeling belonged to the Ganga. See you tomorrow in the next video. Jai Ganga Maya.